Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu and Indian Express. So I'll be covering the most important news of the day and additionally be supplementing the content with some relevant information that can help in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 16th of April. The first topic is India restore e-visa for 156 countries. Second, center ease guideline for OCI card holder. The third topic is UNFPA's population report that was recently launched. The second last topic is US imposes new sanction on Russia. And the last topic is potential of auto industries in India economic growth, right? So these are some of the important news and editorial reported in today's newspaper. Apart from this, there would be MCQs question that would be from the current affairs. So this questions is definitely helpful for your upcoming prelims examination. So make sure you practice this question. We'll discuss this question at the end of this video. So before we start, a small announcement that we have started a mock interview program which is ongoing and you can enroll for this program. This has already started from 12th of April. The three locations you can have a mock interview, that is Delhi, Calcutta and Bhubaneswar, right? So free DAF analysis would be done, state-based questionnaire would be done. The expert board member would be doing it, and this facility is available both online and offline. So what you have to do, you have to just refer to the description section of this video from where you can register yourself, and these are the list of the panel which would be interviewing you to enrich your experience of the real interview, right? Now moving to our news analysis, the first topic, that is center eases guideline for the OCI card holder. The news has been reported in Hindu. Talking about the importance of this news, from which section it can be important. It can be important for your general studies paper to government policies and intervention for development in the sectors. So what the Home Ministry has decided, they have decided that they would be easing the restriction on the entry of the foreign national into the country, right? तो कुछ ease down की गई है restrictions में OCI card holders के लिए, और ministry ने ये कहा है they would allow large number of overseas citizen of Indian card holder from the foreign national to such cardholder of Indian national to enter the country, right? So earlier there was some restriction that was being there. Now the ministry, the Home Ministry, which is the nodal ministry, अब ministry भी याद रखें, that is taking care of entire things. Now the overseas citizen of India, OCI, we'll discuss who are the people who come under the category of OCI. But first let's understand the news. So the OCI will not be required to register for a fresh OCI card every time when a new passport is issued in his or her name. तो बार बार उनको फ्रेश OCI के लिए एप्लीकेशन नहीं देनी होगी. Once they have given the application, it would have some time and the validity would be extended some for other time. Right? तो ये कुछ चेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इसमें, खास करके जो होम मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली they have implemented and they have given the new guideline. Now about overseas citizen of India, who people are the OCI. So as for the Ministry of Home Affairs, OCI person वो होते हैं, was basically a citizen who was a citizen of India or born basically after 26th January 1950. Now he was eligible to become a citizen of India on 26th January 1950. Is a child or a grandchild or such a person among the eligibility criteria. ये कुछ important eligibility criteria है. OCI की जो कार्ड रूल है उसमें सेक्शन 7A में ये clearly mention है कि an applicant is not eligible for OCI card if his parents or grandparents have ever been to India or Pakistan or Bangladesh, right? So पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर वो गए होंगे इस टाइम पे, so they are not eligible. अगर उनके जो ancestor है वो अगर उस region से belong करते हैं तो they would be not eligible for the OCI. And the category was introduced by the government in 2005, and the government of India via Indians Citizenship Amendment Act 2015 has merged person of origin PIO category और OCI category को merge कर दिया गया था 2015 में. So this time is important. They can ask you a question, but mostly जब इन दोनों को merge किया गया, so the question can be asked like what is OCI and what are the exemptions category that is provided to the OCI. Now present provisions की बात करें, no, because Home Ministry has made some changes. Before that, how things work,
As per the present rules, the OCI के जो कार्ड होल्डर है that is required to reissue each time when they have a new passport, right? उनको हर बारी renew करवाना होता था. And even the people who are 20 year of age, अगर उनकी age 50 हो जाती है, so in view of biological changes, because if in the gap of 30 years, a lot of facial things also get changed. आप जैसे 20 साल पहले दिख रहे होते हैं, 50 साल में आप वैसे नहीं दिखते हैं. So to make the facial changes, applicant have to definitely apply it. And a person who has not got registration of an OCI card holder prior at that age of 20 will have to get it they have to get it reissued once they enter to a new passport issued in completing the 20 years, right? So ऐसे कोई लोग जिनको OCI कार्ड होल्डर चाहिए होता, अगर उससे पहले उन्होंने अप्लाई किया तो 20 years के बाद भी उनको एक बार अपडेट देनी होगी. So these are some of the important things to capture his facial information and the attaining adulthood picture, right? So these are some of the present provisions. Now talking about the online facilities, what government did after the changes that Home Ministries has incorporated. So they said a detail of a new passport can be obtained from the OCI card holder and can be uploaded online. तो ये facility को online कर दिया गया है within 3 months of receiving the passport. Once they receive the passport, उसके 3 month के अंदर अंदर वो चाहे तो अपने OCI को update कर सकते हैं. And the ministry said that the foreign spouses registered as OCI would be required to upload a copy of new passport and also the latest photo along with the declaration and their marriage that is still succeeding. तो कुछ खास करके जो नए marriages हैं जो कि ऐसी spouses होती हैं like the husband is working outside and they mostly go into the tourist visa, उनको tourist visa पे जाना पड़ता है. But once their passport is confirmed spouse visa होती है, तो अगर spouse visa उनको मिलती है उसके बाद they are eligible to stay for a longer duration. Now NRI quota की अगर बात करें, so the MHA has said OCI को जो card holders है they are only eligible for admission on the NRI quota in the Indian institutes, जो भी educational institutions हैं इंडिया में based on the all India entrance test. तो ऐसा नहीं है कि उनको इंटरेस्ट नहीं देना होगा, they would be also eligible for the all India test. और इसमें कुछ important examination जिनके लिए वो eligible हैं that include NEET, that is National Eligibility Cum Entrance Test. This is for medical examination. JEE, basically for engineering entrance examination, and joint entrance examination, that is advanced. These two examinations are also for the engineering, and other all India charter test that is listed on the Government of India. And so far as 37.72 lakh OCI card holder has been issued by the Government of India. So this is the data that we have as of now. Now coming to the second news, that India restored e-visas for 156 countries. This is important for your general studies paper 2, bilateral regional grouping agreements evolving India's and affecting India's interest. So again, the Union Home Ministries have restored the electronic visa facilities for the foreigner from 156 countries, right? इससे पहले जो e-visa की facility थी that was available to only 171 countries. Now it has been curtailed to 156. Now this intent to visit India for businesses, conferences, medical reasons, including the medical attendants. So because of the COVID, there was some restriction that was ongoing, but government has tried to ease it out so that the people belonging from the sectors like medical reasons, conferences, business, they can come to India. Now list of countries under exclusions जिनको exempt रखा गया, so that is China, UK, Canada, Hong Kong, Indonesia, Iran, Malaysia, Saudi Arabia are the notable exclusions. Now e-visas की अगर बात करें, e-visas under the following categories, कुछ important categories रखी गई है जिन पे allow की जाएगी. So that include e-businesses visa, e-medical visa, e-medical attendant visas, e-conferences visas that has been restored with immediate effect, right? So people belonging to this category required the visa from this following categories would be given. Now the relaxation come into the wake of a deadly second wave of the COVID-19 pandemic. Now earlier relaxation की बात करेगा, in October 2020 the government of India has enabled foreign to come India for businesses, for conferences, for employment, for education, for research, and for medical purpose to get a regular visas from missions and embassies abroad.
बट इंटरनेशनल एयर ट्रेड की अगर बात करें, एयर ट्रैवल की अगर बात करें, सो 107 इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाए गए थे दैट वाज सस्पेंडेड बाय मिनिस्ट्री, क्योंकि जिस तरह से पेंडेमिक बढ़ रही थी और लॉकडाउन को इम्पोज किया गया था, सो दे वर फाइनली क्लोज, और जो चेक पॉइंट्स था उनको क्लोज कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड द नेशनल लॉकडाउन दैट वाज गोइंग ऑन इंडिया. नाउ लेट इन दिस ईयर द मिनिस्ट्री हैज अलाउड कि जितने भी फॉरेन नेशनल है कमिंग फ्रॉम यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस on business medical employment visas under the air bubble scheme would be eligible for it, right? So these were some of the relaxation that was provided under the e-visa scheme. Now UNFPA population report, this has been launched, and this talks about the women's and their women's right. So this is important for gender studies paper 1, role of women and women organization, population and associated issues. So this type of report is again very important for your prelims examination. They can ask you any questions. So the United Nations has recently launched a flagship state of the world population report. This is titled as My Body is My Own, right? और इस रिपोर्ट की अगर बात करें, so nearly half of the women from 57 developing countries do not have the right. किस किस चीज़ों में उनके पास राइट नहीं है? फर्स्ट, द राइट टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर बॉडीज, including using the contraception pills or the contraceptive methods, seeking healthcare, or even in their sexuality. So the report quotes that in all these three categories, women do not possess the self-right or even the self-freedom. Now more about the report. Report में और क्या क्या बातें कही गई है. This is the first time that United Nations report has focuses upon the bodily autonomy. जो पूरी autonomy होती है, जो बाहर के मतलब खास करके there's two things which we study in medical sciences, that is autonomy और physiology. अगर आप कुछ बॉडी के इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको फिजियोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं, और जो बॉडी की बाहर के स्ट्रक्चर उसको ऑटोनॉमी में काउंट करते हैं, राइट? सो इन्होंने जो ऑटोनॉमी है बॉडी की उसको डिफाइन किया है as the power and agencies that make choices about your body without the fear of violence or having someone else decide upon you, right? So report के मुताबिक that the countries where data is being available, only 55% of women are fully employed to make their choices over healthcare and contraceptions. So you can see there are other things which are also there in the report. तो ये रिपोर्ट का कहना है कि 55% वुमेन पूरे वर्ल्ड में उनके पास सिर्फ चॉइसेस है कि वो हेल्थ केयर में किस तरह से अपनी करें, कॉन्ट्रासेप्टिव के कौन से मेथड्स उनको अप्लाई करने हैं, वेदर द अदर पार्ट ऑफ द थिंग्स हैज़ टू बी देयर ऑन द नॉट द कंसेंट फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट शुड बी देयर, उसमें सिर्फ 55% वुमेन की परमिशंस ली जाती है. Now it has also highlighted that only 75% of the countries legally ensure full and equal access to contraceptions, right? So for women, this is very important because the consent of a woman is very important. Now violations of the bodily autonomy, कुछ examples दिए गए हैं, उनमें included है child marriages, female genital mutilations, lack of contraceptive choices leading to unplanned pregnancy. और वुमेन्स को ये पूरे वर्ल्ड में अराउंड द वर्ल्ड ये देखा गया, दे हैव बीन डिनाइड टू फंडामेंटल राइट ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी. दिस इज बिंग कमिंग फ्रॉम द रिपोर्ट कोड दैट पूरे वर्ल्ड में वुमेन की जो फंडामेंटल राइट्स है बॉडीली ऑटोनॉमी को लेकर के कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ये चीज़ें और एक्सेलरेट हुई है और बढ़ी है और सिचुएशंस को और ज़्यादा वर्स्ट करती हैं. Now the other news from the Hindu, US imposed new sanction on Russia. So this is a news which you have to go to the history, because जिस तरह से जो रिसेंट में यूएस की इलेक्शंस हुई थी प्रेसिडेंटशिप में, उसमें ट्रंप के साथ रशिया ने मिलकर ट्रंप को जिताने की बहुत सारी कोशिशें की हैं. सो नो नाउ द न्यू प्रेसिडेंटशिप द जो बिडेन, दे आर टेकिंग सम रिटेलिएशन मेजर अगेंस्ट रशिया. तो उसमें से एक ये डिसीजन ली गई है. सो यूएस इम्पोजेज न्यू सैंक्शंस ऑन रशिया. So the United States has recently announced a sanction against the Russia, और इन्होंने कहा है कि the US has announced कि sanction जो की जाएगी रशिया में in response to what this cyber attacks has been as an hostile act, right? तो US ने ये कहा कि रशिया की एक बहुत ही hostile act रही है, उन्होंने बहुत सारे cyber attacks किए हैं US एजेंसीज पे. Now the sanctions call for expulsion of 10 diplomats, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, restrict कर दिया गया है, and blacklisting the 32 individual over the election meddling
एंड साइबर अटैक। सो जैसे मैंने आपको बताया, जब जिस तरह में इस टाइम की 2020 की जब इलेक्शंस हुई थी यूएस में, उसमें यह कहा गया था कि रशिया इज फेवरिंग डोनाल्ड ट्रंप, राइट, एंड दे आर डूइंग साइबर अटैक टू इंश्योर कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जीत सके और वो वहाँ पे सरकार बना सके। बट ऐसी चीज़ें विटनेस की गई, तो जो नई प्रेसिडेंटशिप है, डोनाल्ड ट्रंप तो हार गए। नो, द जॉय बिडेन इज लुकिंग फॉरवर्ड कि इस तरह की चीज़ों को पेनलाइज करना चाहिए, इसी वजह से उन्होंने सैंक्शन लगाया था। मेन रीजन बिहाइंड दिस इज दिस ओनली। So the US has clearly stated that the US will impose cost in the strategic and economical impactful manner. रशिया अगर इस तरह से चीज़ों को कंटिन्यू करेगा, एक्सकेलेट करेगा, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली US would be imposing some huge fine upon Russia. Now, Russia का क्या response है? As basically the people who have committed any crime or anything, the response is very lenient. तो उन्होंने नॉर्मली एक रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि शॉर्टली जिस तरह से सैंक्शन ली गई, उसके बाद जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ही सेड इट इज़ अ हॉस्टाइल स्टेप विच इज़ डेंजरसली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ कन्फ्रंटेशन. सो आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट ही सेड, दिस इज व्हाट ही हैज सेड इन ऑफिशियल स्टेटमेंट. और इस जो डिसीजन है यूएस की, उसमें ईयू, यूरोपियन यूनियन, नाटो और यूके ने इस तरह के डिसीजन को सपोर्ट दिया है, यूएस के मेजर्स को, राइट. एंड आई पर्सनली फील दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप किसी कंट्री के जो डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं इलेक्शंस की, उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो डेफिनेटली यू नीड टू बी penalized. Now coming to the other news, this is an editorial from Indian Express, talks about potential of auto industries in India's economic growth. So important for your general studies paper 3, investment models. So what is there? It talks about the auto industry और auto industry किस तरह से बढ़ सकती है, किस तरह से ग्रो कर सकती है, किस तरह से MSME सेक्टर्स को बूस्ट कर सकती है और कई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकती है, उसके बारे में बात की गई है. दिस इज दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर अ इंडियन इकोनॉमी. बात की गई है कि IT सेक्टर अपने आप में काफ़ी स्टार इंडस्ट्री रही है, बट इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो जो ऑटो इंडस्ट्री है उसमें खास के महिंद्रा की तरफ से बात की गई, बिकॉज द राइटर इज अ CEO ऑफ महिंद्रा. ही सेड महिंद्रा हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ ऑप्शन टू द ऑटोमोबाइल बिजनेस इन इंडिया. और अगर टेक्नोलॉजी फीचर्स की बात करें, सेफ्टी, कंफर्ट एंड इमिशंस, द एनर्जी कंजप्शन, एवरीथिंग हैज़ इम्प्रूव्ड ओवरऑल इन द ऑटो इंडस्ट्रीज, राइट. नाउ 3 लेवल ऑफ एडवांसमेंट की बात की गई है इस सेक्टर में. So the first advancement is supplier ecosystem that has been seen in India. Second is the build quality of the products that is there for the automobile sectors. Quality defects की अगर बात करें वो बहुत हद तक reduce हो गई है, almost 90% तक की, now compared to the favorable and most advanced market. And the third is that perhaps the most important in our ability for designs, engineer and develop world-class products completely in India. So this is what the author is saying, the editor is saying, that the quality has improved a lot, the design, the engineering and the world-class product is being manufactured in India. Now contribution to the MSME sector, as we started from the beginning, I have told you कि MSME sector में इसकी बहुत ज़्यादा contributions है, एक बहुत बड़ी employment इस sector में create हो रही है, and this is something which is very important for Indian economy. And talking about the MSME sector, जो micro, small and medium enterprises है, that share a value addition to a car that is 35%, right? And further, automobile market जो है provide economic opportunity to thousands of MSME. बहुत सारे ऐसे MSMEs हैं जिनको ये मदद करती है. And the total number of MSME engaged in the auto value chain is ranging from 25,000 to 30,000. You can see the length and breadth of the MSME sector that is contributing to the automobile sectors, and definitely this is something which is very important for country like India, because automobile के sector, auto industries के sector यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा potentially high है. Now contribution to economy, it has been argued कि एक जो आत्मनिर्भर भारत की जो concept है गवर्नमेंट की, उसको बहुत हद तक इम्बॉइड करता है, जीवित रखता है ये. And it continues that 6.4% of the GDP contribution की अगर बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की, 6.4% तक GDP में contribution है, and around 35% to the manufacturing GDP. एक्सपोर्ट में over 8 million jobs directly और indirectly create करता है, and as many as 30 million more value chain can be created, and it's account for cumulative of 35 billion over 10 years. So this is the potential of the sectors,
and the India's exposed revenue to $27 billion, nearly 8% of the total merchandise that is exported from India. So you can see the potential of this sector. If you're writing this as main examination, make sure आप सारे important points note कर लें. Now another opportunity for India is to carve out the niche, that is जो ईवी टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट टेक्नोलॉजी है, खास करके जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ने की जो कोशिश है, वो भी मोबिलिटी सेक्टर को बहुत हद तक डिलीवरी प्रोसेस में मदद कर सकती है. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरह से जो ईवी टेक्नोलॉजी, जो सेल्स टेक्नोलॉजी है, उनको लाया जाए ताकि जो पॉल्यूशन में कमी भी ला जाए इसके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में या फिर ऑटो इंडस्ट्रीज में. Now way forward, this is a time for the government and industries to work together. और ये अगर दोनों मिल के काम करें तो डेफिनेटली द इंडस्ट्री कैन ग्रो बाय 10 to 12% पर ईयर इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स. और जो इंडियन प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, ग्लोबली काफ़ी कम्पिटिटिव है, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें इंप्रूव हुई है. तो इंडिया को ये ज़रूरत है, इंडिया नीड टू साइन अ बायलैटरल ट्रीटी टू फेवर द टेरिफ रिजीम ऑफ द ऑटो एक्सपोर्ट्स. सो गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना पड़ेगा एंड दे नीड टू फाइनली वर्क अपॉन इट. And the government has released automobile mission plan 2026. So इस मिशन प्लान के अकॉर्डिंगली काम करने की जरूरत है. जहाँ पे पॉलिसी को रिवाइज होनी चाहिए वहाँ रिवाइज करनी चाहिए, और करेंट कंटेक्स्ट में दे नीड टू ज्वाइंटली वर्क विद द इंडस्ट्री. सो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, राइट, PPP मॉडल पे भी काम कर सकते हैं. दे कैन हैव अ PPP मॉडल एंड अकॉर्डिंगली दे कैन इम्प्रूव दिस सेक्टर एज वेल. So this would be the way forward that you can write in the examination. Now moving to the MCQs question of the day. The first question is from the current affairs, that is OSmart. The question that we are asking is to ensure कि जितने भी चीज़ें current affairs में important रही हैं उसकी practice आप यहाँ पे ज़रूर करें. OSmart recently sees news is related to aim at regulate use of ocean maritime resources for sustainable development, strategic partnership agreement with IEA to promote transparency in the jute sector, and liquidity risk monitoring tool for the stock market. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट दैट आंसर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. तो जो आप यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर सेलफोन पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो आपको वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन मिलेगी, वहाँ पे अपने आंसर्स आप लिख सकते हैं. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय IEA एनुअली एंड इट इज़ नॉट एन एसोसिएट मेंबर ऑफ IEA. इंडिया जो है वो associate member नहीं है. So which among the following is correct? That you have to decide, and you can make some intelligence guessing also to get the correct answer. To ensure that you are participating and writing your answer in the comment section down below. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up, and you can share this video with your friend so that they can also be benefited. For any other concern, you can let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.